Hey guys, welcome back to the Disney Pixar Connection. I'm Alex. Thank you guys all for tuning in. It is Tuesday, and Tuesdays and Thursdays are our theory days. We are kicking it off on the schedule with the Pixar Theory. As you guys can guess from the ears as well as the title, we have a lot in store. So, I want you guys to grab your tissues because it's going to get a little emotional up in here. Grab your snacks, grab your drinks, and get comfy. It's going to be a little bit of a longer video. Let's get into it. Alright guys, I hope you guys enjoyed that roundup of clips. We're going to talk a little bit of history before we really dive into the theory. So, to begin with, Pixar was a company that was started up in 1986 by 4 gentlemen. You can name them down below. I'm really not going to go into each and every one of them, but just to clarify, the company started on creating a computer that created CGI images. So CGI is computer generated images. And this is really what set Pixar apart when they became a film, came into the film world. Now, yes, there were animators that were part of those, the original group. They started off with like short clips that are like 15, 30 seconds, and then they created a 3-minute, almost 3-minute short called Andre and Wally B. And they began becoming a little bit well known for their short films. Tin Toy, Red Streams, Jerry's Game, Boundin', For the Birds, and so on. Luxor Jr. as well. We're going to get into that because then in 1995, they created their first theatrically animated film. And this is what set them apart from the rest. They released Toy Story. We all love Toy Story, or I hope most of us love Toy Story. It's not really my favorite, to be quite fair with you guys, when it comes to the Pixar films, but I did love it so much, I still have it on DVD and VHS. Alright, so anyway, they released Toy Story, and this is what really kicked off their company, right? This is what made Pixar Pixar. They created all new, never seen before, original stories. They're not using stories of fairy tales that were done over and over again. They only create original works, which is amazing, by the way. Alright, anyway, so the little backstory between Disney and Pixar, though, and this is what is pretty important and also interesting / petty a little bit, we're going to get into that, is Disney was not always really good to their animators, let alone cast members in general. Not going to go off on that. I actually had a great experience as a cast member, but other people did not, especially a lot of animators, which is why when Pixar was starting to become this really big thing, a lot of Disney animators decided to go over to Pixar. John Lasseter, Pete Docter, Brad Bird, for example, and many more, including Tim Burton. He was not in Pixar, but he did go in a different direction. He left Disney at one point, came back, left, back. That's a whole other thing. I will talk about that during the Tim Burton theory. Anyway,
Pixar and Disney love-hate relationship, right? And so they competed for a long time. And then Disney bought out Pixar. Now this is where it gets petty. Pixar was not exactly happy about it, right? And especially with newer releases on Disney Plus. And let me just say, Disney pretty much screwed Pixar over. Now, granted, Disney is the parent company of Pixar. They do generate money. Now, yes, we're in the middle of a very big P. That could go the wrong way, but I mean pandemic. And that has really changed the way that the film industry is. So, Disney released Soul, fantastic movie by the way, on Disney Plus without the VIP access. Now, this screwed Pixar over because they did not generate any money from that. Pixar was petty because instead what they did was, instead of putting Disney in the front, they put Pixar, then they put Disney, then they put Pixar again. They're like, hey, this is really a Pixar movie, not just Disney. So, boom. All right. Anyway, we can totally dive into that. You guys let me know down below if you want more of that kind of history. So yeah, as we can see, there's been a love-hate, and it's not always a glorious thing as much as we, as film connoisseurs, as film lovers, as fans, adore it, right? We don't always know that back end of it. I think it's hilarious and also sad at the same time, but maybe you guys don't. Anyway, so that has been going on for a couple of decades, you know what I'm saying? Anyway, so now a lot of you guys are interested in the theories because this company, Pixar, has kind of come out and began being even more popular due to the Pixar Theory. Now, this is what gets interesting. Now, this is John Negroni, who created the Disney Pixar, linking all of the films together in one timeline. A113 ये A113 नंबर Now, हमें पिक्सार के सभी A113 मूवीज does में देखने मिलता है। reference सबसे पहले ये something दिखा in था टॉय particular. स्टोरी As 1 you में, can see उसके बाद में throughout A these Bug's Life clips, मूवी में दिखा they था, are फिर in a फाइंडिंग नीमो में lot भी of देखने different मिला Disney था, movies और फिर and कार्स में Pixar. एक ट्रेन These are पर all देखने Pixar मिला, movies. और फिर But वॉली
it's not just for Disney and Pixar. They are in fact, other films that are not of these two companies. And the reason being is that A113 references Cal Institute of Arts. As you can see, John Lasseter, Pete Docter, and Brad Bird all went to this school for animation. And here we have the three guys going there together, and the room that they learned animation in is A113. classroom. A little Easter egg there for you, huh? इस क्लास में पढ़े थे. So the next time you watch a film, can you find all the A113s besides the ones that are pointed out here? अगर पिक्सार थियरी की माने तो ये कुछ हद तक जोक है, बट एक्चुअल में ये नंबर पिक्सार यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ये नंबर का पिक्सार थियरी में क्या इंपॉर्टेंस है? The Good Dinosaur. Now, The Good Dinosaur does take place in an alternate universe, as we can see in this clip, where humans and dinosaurs live on Earth. Now, the reason we know this is because, as we see from right here, the meteor completely passed by. The dinosaurs weren't killed off. And they can talk, which I'm pretty sure dinosaurs didn't speak English or any other language. Am I right? Anyway, this story tells of a young dinosaur who lost his father. So sad. But he does connect to this little boy Spot, and Spot has also lost his family. There are so many amazing Easter eggs in here, and they do link to other films. Next up, we have Brave, which is set in 10th century Scotland. So we did a big jump. Merida is the only Pixar princess. She's also the only princess that does not break out into song. Anyway, Merida does not want to be married off. She follows Will of the Wisps, which lead her to the witch. Now, the witch plays a vital role in John Negromi's theory. He does believe the witch is Boo from Monsters, Inc. There are several hints to that, being she has a carving of Sully, she uses doors as part of her magic, and she knows a few different things about the world. I mean, what do you guys think? और इसके पीछे एक जादूगरनी चुड़ैल है. तो आखिर कौन है ये चुड़ैल? एक्चुअली ये चुड़ैल इस पूरी थियरी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. उसके बारे में हम बाद में जानते हैं. अभी हम वापस अपनी टाइमलाइन पर आते हैं. हमने अब पिक्सार के दुनिया में जादूगर चुड़ैल को देखा है, तो वो सिर्फ अकेली ही तो ऐसी नहीं होगी जिसके पास ऐसी मैजिक पावर है.
सो ऐसा समझ लो कि हैरी पॉटर के दुनिया के Next तरह up in इस the दुनिया में भी theory, जादूगर we छुपके have रहते The हैं और Incredibles, धीरे-धीरे ये which was जादू set ह्यूमंस में ग्रो beginning in होती है और 1950s, इसी जादू ending के in वजह से 1960s. इवेंचुअली There are several 1950s के clues to टाइम this, पीरियड में being that they धरती said पर 10 years कुछ later. इंसानों में There's सुपर पावर्स आ जाती newspapers, है और all हमें that देखने jazz. मिलती है I द do believe इनक्रेडिबल्स it's 1 set in और Chicago इनक्रेडिबल्स 2 की for many स्टोरीज। reasons. इनक्रेडिबल्स Again, 1 में the हम विलन background. बड़ी से मिलते हैं। Also, बड़ी के there is a इंट्रोडक्टरी सीन में clue. हमें देखने मिलता है कि छोटे Fabulous बड़ी Hudson के Hornet, पास सुपर aka the पावर्स sheriff, नहीं होती है is seen बट ये part छोटा बड़ी during काफी part स्मार्ट of होता the है। fight. वो बचपन में ही कुछ गैजेट्स बना के Now, उड़ the सकता reason है that The और Incredibles मिस्टर is इनक्रेडिबल important के is मिशंस में because मदद we करना know चाहता that है humans बट can मिस्टर not only be इनक्रेडिबल उसे डांट कर superheroes, घर भेज देते but हैं और by यहीं and पे large, बड़ी का BNL दिमाग सटक can जाता be है और seen ये बड़ी आगे चल making के इस the मूवी का AI विलन the सिंड्रोम बनता है। Omnidroid. इनक्रेडिबल्स So, 1 में सिंड्रोम what are your सभी thoughts? सुपर हीरोज को मार डालता है सिवाय इनक्रेडिबल्स फैमिली के। सिंड्रोम ओमनी ड्रॉइड करके एक रोबोट बनाता है और सिंड्रोम का प्लान होता है कि इस ओमनी ड्रॉइड को शहर पे अटैक करने भेजे और वो वहां पर पहुंच के ओमनी ड्रॉइड को मारकर सभी के नजर में हीरो बन जाए। बट ओमनीड्रॉइड में अचानक से सूझबूझ आ जाती है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेंटिएंट रोबोट बन जाता है। इस सीन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टेब्लिश होता है और वो है मशीन्स इंसानों से अब नफरत करने लगे हैं और ये ओमनीड्रॉइड वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खूंखार है। बट इस ओमनीड्रॉइड को इनक्रेडिबल्स की फैमिली मार गिराती है। बट क्या एक्चुअल में ओमनीड्रॉइड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मर गया है? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब टाइमलाइन पहुंचती है Now, अर्ली 90s, fast 2000s forward और to अर्ली the 2010s के पीरियड में। 1990s, और इस late पूरे पीरियड 1990s, में बसे है टॉय 1995 स्टोरी के मूवीज। to हमें 1998. चारों टॉय स्टोरी We मूवीज में देखने have मिलता है Toy Story खिलौनों and में भी Toy Story feelings 2. होती है। ये खिलौने एक्चुअली एक तरह Now, के मशीन्स है these जो films सोच are सकते हैं। set in उनका भी Ohio, दिमाग है। and बच्चे they do बड़ा follow होने पर the जब इन toys टॉयज को of फेंक देते हैं तब उन्हें दुख होता Andy, है। उनके भी and इमोशंस है Woody और हम finds out सभी that टॉय स्टोरी his के मूवीज में ऐसे mom फेंके हुए had खिलौनों को Jessie, मिलते but हैं they जो haven't कि really अपने figured that ओनर out. ने Woody फेंक hasn't देने figured that पर out, but काफी Andy has. दुखी होते हैं और Anyway, इंसानों को हेट they करने लगते meet हैं। new इसमें शामिल है characters, टॉय स्टोरी के they have जेसी की to स्टोरी और escape. टॉय स्टोरी 3 का विलन It's लॉट्स a ऑफ द whole बेयर big की thing. स्टोरी। We also ह्यूमन learned चिल्ड्रन ने that फेंक देने toys पर ये ह्यूमन have से energy नफरत करने off लगे थे। their ओवरऑल owner's इस पिक्सर थियरी के emotions. सभी फिश में सूझबूझ रहती है। Then we यहाँ have पे Finding literally Nemo school and system Finding दिखाई है। Dory. ट्रैफिक There are संभाली जाती several है वो pieces दिखाया to है this. और We इस know फिल्म में कई that सारे एनिमल्स Nemo, मिलके एक ह्यूमन well, को there's हराते several हैं। theories to And Nemo, guess but we who is know the villain that of this story? he Obviously travels इंसान, to जिन्होंने Australia, नीमो को Marlin fish gets tank him में कैद back. करके रखा है। There's a मैंने lot of पहले Easter कहा था eggs कि फाइंडिंग नीमो in मूवी this, के including डेंटिस्ट के ऑफिस सीन में एक this बच्चा इनक्रेडिबल्स का Mr. कॉमिक Incredible पढ़ता and रहता Toy है Story और यहीं पर नीचे टॉय स्टोरीज का Easter बज eggs. लाइटईयर का So खिलौना just भी to देखने मिलता clarify, है they और are in पिक्सार there. थियरी इस सीन का जवाब देती है। But हमें what's ये also देखने मिलता है interesting is क्योंकि they both इनक्रेडिबल्स एक्चुअली show पिक्सार के दुनिया का that रियल हिस्ट्री है और Dory लाइटईयर के खिलौने can सभी जगह बेचे जाते read. हैं। ऐसे ही आगे Now, फाइंडिंग from डोरी Finding में Dory, इंसान it is set समुद्र को गंदा after कर रहे हैं ये दिखाया है Nemo. जिसके कारण We know फिश that और she बाकी came प्राणी from इंसानों से नफरत California, करने लगे हैं। रैटाटोई correct? फिल्म में And so एनिमल्स there सबसे are ज्यादा pretty सेंटिएंट interesting दिखाए हैं। clues to इस that मूवी के as well. सभी चूहे इंटेलिजेंट दिखाए हैं Moving और एक into चूहा फिल्म का Ratatouille, हीरो kind of रेमी on the को same lines पेरिस as का Finding बेस्ट Nemo and कुक Finding बनता है। Dory. खाना बनाना The सिर्फ animals इंसानों का फील्ड है know बट how to इसमें एक communicate चूहा आ with जाता है। humans. रेमी They खाना have बना सकता है ये skills. सिर्फ 4 लोगों को They're रेमी को not देख के happy पागल ही with हो जाता humans है either, और वो मीडिया में which जाके बताता plays है a कि vital होटल role में in चूहा खाना John बनाता है Negroni's जो कि ऑब्वियसली theory. कोई नहीं मानता। But Now, what if in किसी Up, ने इस न्यूज़ को it doesn't actually play a seriously super लिया हो? vital इस role, theory के but अनुसार it does इन show that चूहों the के dogs emotions की can खबर मिलती है talk through अब the मूवी के collars विलन to चार्ल्स humans. मन्स को। It इस also न्यूज़ के shows बाद a ही B&L चार्ल्स अपने logo खुद के on एक्सपेरिमेंट करने the लगता है और construction वो एक equipment, ऐसी meaning टेक्नोलॉजी they are डेवलप करता है slowly जिसकी taking वजह से over. वो कुत्तों को इंटेलिजेंट बनाता है और ये कुत्ते जो भी सोचते हैं वो हम इंसान सुन सकते हैं। फिर आता है इस पूरे थियरी का सबसे इम्पोर्टेंट
दिमाग में बिंग बोंग रहता है We have क्योंकि Inside राइली Out, के दिमाग में which हमेशा ही reveals बिंग बोंग नाम the के source किसी of क्रीचर human की energy. याद रहती है। Taking कोको place in मूवी में भी memories का 2017 importance in दिखाया है। अगर कोई Mexico, इंसान मरता है तो वो Coco actually will नहीं be मरता, about वो an मरे हुए adventure लोगों through की the land दुनिया of में the जाता है। dead. But Among वो उस दुनिया possible में तब hints तक of रहता human है जब energy, तक धरती पर it कोई उसकी transfers याद itself करता है। into the जैसे ही मरे afterlife, हुए इंसान की which धरती is पर से important कोई for याद later. नहीं करता, There तो are वो many खत्म हुई। clues वो है hinting वॉली। at the इस connection मूवी में हम between इंट्रोड्यूस होते these हैं पिक्सार के दुनिया का सबसे बड़ा spirits विलन and the बाय एंड wisps लार्ज से। from हमें Brave. इस मूवी में पता चलता Then है it's कि बाय Wall-E. एंड लार्ज यानी By कि BNL 2057, BNL, or by and large, has taken over the world. Literally, they have run humans off planet Earth. And so, while humans are living in Axiom and being controlled by BNL, Wall-E is a robot stuck on planet Earth trying to clean up. Now, it does fast forward, and you will see that. So, between then and, well, when they return from Earth, there's a few things that happen. कचरे को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी BNL डिस्पोज कंपनी पर है। बट क्या वो कचरे को प्रॉपरली ठिकाने लगाते हैं? तो ऑब्वियसली नॉट। हमें वॉली मूवी में पता चलता है कि दुनिया में इतना ज्यादा कचरा हो गया है कि इंसानों को पृथ्वी को छोड़ के अंतरिक्ष में जाना पड़ता है। इंसान तो अंतरिक्ष में जाते हैं, बट उजड़ी हुई धरती पर सिर्फ BNL कंपनी के रोबोट वॉली रहते हैं। एंड गेस इंसान अंतरिक्ष में किसके स्पेसशिप्स यूज करके जाते हैं? ऑब्वियसली वन एंड ओनली बाय एंड लार्ज के। सभी ह्यूमंस BNL के एक्सियम नाम के स्पेसशिप से अंतरिक्ष में जाते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये बाय एंड लार्ज कंपनी मतलब दाल में कुछ काला है। पिक्सार थियरी के अनुसार ये BNL की कंपनी और कोई नहीं बट एक फेस ले जाते हैं। For example, in Cars 1, 2, and 3, as well as Planes and Planes Fire and Rescue, even though they're not Pixar films, it shows that the machinery has begun taking the personalities of their humans. वॉली में एक्सियम पर जो AI ऑटो होता है वो ये नहीं चाहता कि इंसान धरती पर वापस लौटे, क्योंकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो में कोई एक डायरेक्टिव A113 नाम का ऑर्डर होता है। ये एक ऐसा कोड रहता है जो ऑटो को बताता है कि धरती इंसानों के रहने लायक हुई तो भी वापस धरती पे नहीं आने का। और इसका ऑब्वियस आंसर ये है कि मशीन्स नहीं चाहते कि इंसान उनके गुलामी से और कार्स के दुनिया में Now, back to Wall-E, the Operation Cleanup has ended in 2110, but BNL is having a tough time trying to allow the humans back onto Earth. However, due to Wall-E and Eve, they have figured it out and bring the Starliner back to Earth so that humans can repopulate the planet. हजारों सालों के बाद इंसान बदलते हैं और इंसान बनते हैं। Monsters. Then we have Monsters University and Monsters Inc. Now, there's several things about this. This is really another part where John Negroni has come up with a theory. He does believe that Boo, the little girl, does become the witch in Brave, and that she tries to use doors to find Kitty, aka Sully, again. There are several clues to this. It does also link Toy Story and Finding Nemo through some Easter eggs. And as we can see in Brave, well, like I said, there is a statue carving of Sully. I don't know, what are your thoughts? I know
इस थियरी का ये सबसे वियर्ड पार्ट है, बट आखिर तक देखिए क्योंकि ये टाइम ट्रेवल वाला पार्ट भी एक्चुअली सेंस बनाता है। मॉन्स्टर्स के दुनिया के ये दरवाजे सारे मॉन्स्टर्स को एक्चुअली पास्ट में, भूतकाल में भेजती है। बट मॉन्स्टर्स इंक मूवी में एक इंसानों की छोटी बच्ची बू मॉन्स्टर्स के दुनिया में घुस जाती है और पूरे मूवी में हमें देखने मिलता है कि छोटी बू और उसके मॉन्स्टर सली में एक क्यूट रिलेशनशिप डेवलप होती है। छोटी बू सली की लाडली बन जाती है। मॉन्स्टर सली अपने दोस्त माइक वजाउस्की के साथ मिलके दुनिया के सारे मॉन्स्टर से लड़ता है, बट बू को बचाता है। मूवी के एंड में सली बू को उसके घर पे वापस छोड़ता है। सली बू को छोड़ के अपने दुनिया में वापस चला जाता है और उसके बाद बू जब अपने अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसमें कोई नहीं होता। इसके बाद बू को अपने प्यारे सली की हमेशा याद सताती है। बू के जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है कि वो अब सली को वापस मिले। वो सली को ढूंढना चाहती है। सली के ही खोज में ये बू आगे जाके बनती है द विच फ्रॉम ब्रेव मूवी।